टेल मी, अगर सोशल साइंस रिसर्च है, हम करते हैं कोई भी स्टडी, सो हु इज द पर्सन हु इज बेनिफिटिंग फ्रॉम आवर रिसर्च? सो रिसर्च से अगर आप देखोगे कि रिसर्च के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं. मोस्ट पीपल थिंक कि रिसर्च क्या है, प्रोफेसर्स करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और रिसर्च वहीं तक है. दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग. रिसर्च बहुत ही परवेसिव है, यानी कि वो फैला हुआ है, हर किसी को रिसर्च की जरूरत है. मैं आपसे नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा कि कैसे रिसर्च हेल्प कर सकती है एक न्यू पेरेंट्स को अपने चाइल्ड के लिए चाइल्ड केयर सेंटर ढूंढने के लिए. ठीक है. Now, if you see that in this slide, they are saying that parents, business owners, advertisers, managers, administrators, officials, people from all the different sectors can use research. ठीक है. रिसर्च बच्चों को बड़ा करने में इस्तेमाल हो सकती है, रिसर्च क्राइम को रिड्यूस करने में भी हो सकती है, रिसर्च हेल्थ कंसर्न्स को डायरेक्ट करने के लिए हो सकती है. Now to sell products also you can do research. There is something called, can anyone tell me what is it called? अगर आप प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए रिसर्च कर रहे हो, it's market research. Okay, so there are many different types of research that we do. Then there could be different types of researches that we do. Now coming on to this, now this is a very practical problem which I have put here. A couple wants their 3-year-old kid to put the 3-year-old kid in a care center. अब केयर सेंटर में पेरेंट्स कैसे भेजेंगे, इस डिसीजन को वो कैसे लेंगे? क्या रिसर्च कुछ कहती है इसके बारे में? जो न्यू पेरेंट्स है वो कैसे डिसाइड करेंगे हम अपने बच्चे को किस केयर सेंटर में भेजें? तो यहाँ पे प्रॉब्लम है केयर सेंटर के बारे में जानना. अब देखते हैं रिसर्च इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है. ठीक है. Now moving on here, if you see, now can someone read this? Okay, let's go to Anjali. Anjali, just read this first study. One study. We get a lot of information about care centers. What kind of a care center is good? Is care center safe for children or not? At what age they should go into a care center? Now, this type of research could be helpful for new couples who want to raise their kids best. Okay, so now you can understand from this that research has a relevance. Now, here it says that the paid child care center is safe, so that parents would choose for a paid child care center. Also, center-based care is far safer than in private homes. Now, this would mean that parents will send their children to center-based care rather than private homes. Now, you see that is a decision that you can just make by reading the research. You do not have to visit the care center. If you do understand that these researchers are good, so you might try to understand their research and have some applications with that. Now this another study says that basically जो बच्चों का रीडिंग स्कोर होता है और ये सब चीजें होती हैं, ये अफेक्ट होती हैं वो किस चाइल्ड केयर सेंटर में. तो सेंटर बेस्ड जो केयर सेंटर्स हैं, जैसे कि मैंने पिक्चर यहाँ पे लगा रखी है, इसमें बच्चों का जो रीडिंग स्कोर है और मैथ स्कोर है अच्छा हो जाता है, but it has some effect on their behavioral skills. बच्चे थोड़े से aggressive हो सकते हैं, less cooperative हो सकते हैं. So now this another study this says that children जो अर्ली एज पे स्टार्ट करते हैं, यानी कि 2 से 3 साल के बच्चे को जिसके पेरेंट्स डालते हैं चाइल्ड केयर सेंटर में, these people have the best benefit. ठीक है, उनको लार्जेस्ट बेनिफिट मिलता है. एंड देन यू नीड एक्टिव पेरेंटिंग to have to reduce any negative consequences जो बच्चे के सेंटर केयर से हो सकते हैं. Now this would mean that you get to know a lot about how the research is valuable. You would be getting my point that this research is how this research becomes valuable. Now if you see this what these two studies are, the first one is pretty common. Obviously बात है कि पेरेंट्स क्वालिटी केयर करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा देन टाइम स्पेंड ऑन केयर रिसर्च. द सेकंड वन इज आई वुड थिंक ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस. इसने कहा है जो नॉन प्रॉफिट केयर सेंटर्स होते हैं उनमें केयर अच्छा होता है, नॉन रिलीजियस होते हैं उसमें अच्छा होता है देन अदर टाइप्स. दिस इज अ फाइंडिंग. अगर कोई कपल हो जो अपने बच्चे को केयर सेंटर में डालना चाहता है उसके तो फाइंडिंग है, क्योंकि अगर वो सोचे कि हाँ यार जो नॉन प्रॉफिट है नॉन रिलीजियस है
इन केयर सेंटर्स में बेटर केयर हो जाएगी. So this is something that you keep in mind that research is something of value. ये सिर्फ पेपर पब्लिश करने के लिए नहीं होता है. It also has some values. Now the other day I was talking about one thing. I'm just typing it. You keep this word in mind. So your first point समझ नहीं आया. Okay. Now what I was saying that this quality of care is important than the amount of care. This is the research, what this research is saying. ठीक है? Whether आप पेरेंट्स की बात कर लो या केयर सेंटर की बात कर लो, केयर बेटर तब है जब वो अच्छी क्वालिटी के साथ दी गई हो, ना कि ज्यादा टाइम दिया गया हो. टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं बताई गई है इसमें. द टाइप ऑफ केयर दैट यू आर प्रोवाइडिंग वो इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी उसकी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, मैंने आपसे पहले भी पूछा था एक क्वेश्चन कि हम रिसर्च हम क्यों करें, कि हमारी अपनी ओपिनियन, हमारा अपना एक्सपीरियंस काम का नहीं है. So the point comes that we all humans have our limitations. That's why we need research. Now going on to this slide, you can say that, now I have a question for you. Just type the answer. Which car is safe? SUVs or the smaller cars? कौन सी कार सेफ है, SUVs or smaller cars? Type the statement, type the answer in the text box. Are SUVs safer than the smaller cars, or are smaller cars safer than the SUVs? Okay, depends upon driver. Small ones, okay. Smaller ones, okay. The ones, okay, SUVs अगर कुछ होता है तो okay, उसकी strong body होती है. But you know what? Common experience says that people say the same thing. The next point is that some people say that common sense or personal experience में कुछ कमियां हैं. That's why we need to do research. Now, some of you said that SUVs are good because they have a strong body, but actually research find करती है that SUVs get the most damage when involved in an accident compared to the meager cars or the smaller cars. Smaller cars होते हैं उसमें ड्राइवर को बहुत कम डैमेज होता है. ठीक है? It's because it's simple. It's physics. The bigger thing, the bigger unit goes with bigger force. Okay, and the smaller unit goes with a lesser force, so less damage. So, but common sense, people say that लोगों को क्या लगता है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, smaller cars are better. Now you tell me the second part of it.